by 3 times loudly chanting Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. We begin the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanamashlalaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaraghunathānvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhamrita Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Ashayati Shatarini He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Ananta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So welcome all of you to the session of Kivrinta Camp. So hopefully all of you must have had very good experience. परेशानी बहुत होती है जब भी कैंप्स वगैरह होते हैं. So it's always a headache and a pain in the neck. Organizers के लिए भी और students के लिए भी, क्योंकि हमारे बीच में हम सबका अपना अपना रूम होता है, रूम से लगी बाथरूम होती है. यहाँ एक ही हॉल में 20 लोग रह रहे हैं, 2 बाथरूम में 2:30 बजे से उठ जाना पड़ता है. अल्लाह टेम्पल के हेड पुजारी से जल्दी उठ जाते हैं, फिर सब नहाने के लिए इसमें भागते रहो, है कि नहीं. कहीं पानी गर्म है नहीं है, कहीं पर रॉड है, कहीं पे गीजर है, कहीं पे नियम कानून बता दिए जाते हैं. ज़्यादा शोर नहीं करना है, लिफ्ट में नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. एक तो कैंप में आ रहा है, ऊपर से नियम कानून भी है. So it's very painful actually. It's very austere. But it's my personal experience that when we used to attend camps also was austere experience. तो यहाँ पे जैसे 60 devotees आए. We had camps of 1200 devotees all over India. तो हमें ऐसा मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमें लिटरली टेम्पल के गेट पे सोना पड़ा था. 1200 स्टूडेंट्स कहाँ सुलाएंगे, तो ज़्यादा ही हो गए थे. But still the experience which we get through intense chanting and hearing in association of devotees, when we have that experience, we actually understand that actually it is worth the austerity we are doing. Okay. So therefore these arrangements have been made. Yesterday also we were discussing in Nishta camp class. किसी भी चीज़ की अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, so we always need to go beyond our limits. तो चाहे कुछ भी हो, either we want to increase our study hours, तो प्रैक्टिस नॉर्मल से ज़्यादा भी करनी पड़ती है. लेकिन if we want to increase our stamina, we need to do more and more cardio, more and more running, जिससे हमारा स्टेमिना बढ़ता जाता है. If we want to increase our muscles, we need to do more and more weight training. है कि नहीं. जो वेट हम पहले उठाते थे उससे थोड़ा ज़्यादा, जिससे कि मसल्स में पेन होगा, 10 के 5 सेट ही लगेंगे. जो जिम गए उन सबको पता होगा सब चीज़.
लेकिन धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाता है, फिर हम उससे और वेट उठा लेते हैं, 5 का 7.5 का 10, 12.5, 15, 17.5, 20, है कि नहीं? Similarly, when we understand that goal of our life is to become Krishna conscious, and the most important activity of spiritual life is reading and hearing, reading and hearing, association of devotees. तो उसके लिए फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के समय बहुत दर्द होगा, सारे बेस के लोग एक साथ रुकना, है कि नहीं? 3, 4, 5 बजे एक साथ रुके एकदम भेड़ बकरी जैसे। आप लोगों को पता नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार कहाँ हम बेस के लीडर मैनेजर और कहाँ हैं बच्चे लोग के साथ करती हैं। और हम अच्छे बेस वाले हैं, ये नया नया इनको कुछ आता नहीं, है कि नहीं? हमको ओपन कर चड्डी पे we have good standards and these people don't have any standards, ऐसे जो कहा दिया। हमारे बेस का रूम ही फ्लैट ही अलग देना चाहिए अगली बार से। पेनफुल प्रोसेस गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया आज तक। डिवोटीज ओनली लाइक 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कीर्तन और प्रसाद। लेक्चर होते किसी को याद नहीं रहता कि आपका काम बोलना, हमारा काम भूलना है। कौन सा हम याद ही रखने वाले। आपकी प्रोफाइल है, आपको बोलना है और कुछ काम आपके पास, और हम वैसे ही भूल जाएंगे गेट से निकलते से। बट द मोर वी प्रैक्टिस, the more we are eager to do such events, association of devotees, more and more reading, more hearing, and especially when all the devotees come together, there is a different synergy and strength. That is the process of this age of Kali. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ आकर भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, उससे अपने आप हमारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। That is the युग धर्म। This is just a glimpse of Yuga Dharma which Chaitanya Mahaprabhu has come to teach, है कि नहीं? तो जब भी arrangements होते हैं, we should be very eager, enthusiastic to participate, क्योंकि ये चीज़ें हमारी spiritual stamina बढ़ाती हैं। पहले ऐसा कभी होता नहीं था, but then devotees designed this winter summer camps, क्योंकि एग्जाम के बाद सब बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन घर पे जाके फिर वो एकदम ही सब भूल जाता है। ऐसा होता ही, मेरे साथ हो रहा है, तो आप लोग का तो पूछूंगा ही नहीं। एकदम भूल ही जाते हैं प्रभु जी वगैरह कौन थे, बेस कुछ है कि नहीं है। आखिरी दिन याद आता है बस कि मैं बस इंदौर जा रहा हूँ, तो हाँ बेस में कोई था, वहाँ जाते हैं। So just to give that booster of energy before going to home, so that our spiritual practices are not loosened, this arrangement is made that we come in association of devotee, हम थोड़ा चार्ज हों और फिर अपनी जगह वापस जाएं, so that we can preach more, we can practice more intensely, है कि नहीं? So therefore we'll be discussing a very important topic today, 3 pillars of trustworthy character. Maturity शायद हो चुका है, non-envy is done today, Abhachan Guru. Actually it is your attached fortune कि ये वाला जो एस्पेक्ट है वो मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि कोई स्पीकर मिला नहीं, है कि नहीं? और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हम जैसे गरीब होते हैं, मजबूरी में देना पड़ रहा है। This is actually the most vital aspect of the trustworthy character. I was discussing with devotees that in Pune in voice camps, since 20 years, only Radheshyam Prabhu is giving class on this topic. उनके अलावा आज तक किसी ने दिए, वो किसी को देने भी नहीं देते। Integrity is such a powerful value. कोई भी नहीं देता है। बाकी maturity and non-envy other devotees they can speak, वो बोलते हैं उसके बारे में, क्योंकि प्रभु जी का शेड्यूल थोड़ा बैक चलता है, वो दूसरे को दे देंगे, ये आप संभाल लेना। लेकिन ये वाला no one speaks, only Radheshyam Prabhu gives this topic, क्योंकि उनके हिसाब से इंटीग्रिटी बस श्रील प्रभुपाद में ही है और बाकी किसी में नहीं है। मतलब आई एम जस्ट, ही नेवर सेड दिस, लेकिन इतने हाई लेवल की इंटीग्रिटी, फॉलोइंग व्हाट इज सेड, इट्स अ वेरी वेरी डीप रूटेड वैल्यू। सो आई माई आई डोंट फॉलो दिस टू दैट एक्सटेंट। सो
जितना मैंने सुना है, जितना हमने प्रिपेयर किया है, जितना श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में, अपने लेटर्स में लिखा है, so I'll just be sharing the content with all of you. I'm not speaking my realizations, क्योंकि मैं हर चीज़ फॉलो मैं भी नहीं कर पाता. We are all sadhakas to some extent, some experience, some with less experience. So I beg all of you that please bless that all of us can follow together this aspect, जिससे हम उन आदेशों का पालन कर सकें जो हम सुनते आ रहे हैं अपने शिक्षा गुरुओं से, अपने दीक्षा गुरुओं से, है कि नहीं? In the morning we heard Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had so many dreams regarding preaching. When we heard his life history from Krishna Kishore Prabhu, such fire he had for preaching. वो डिसाइपल से क्या क्या चाहते थे, है कि नहीं? जैसे कि बोलते हैं शेर का बच्चा बकरी का नहीं हो सकता, और गलती से हम बब्बर शेर की औलादे हैं, है कि नहीं? तो हमें भेड़ बकरी नहीं बनना है. अगर हमें उस क्वालिटी का बनना है, we need to follow that intensely also, है ना? I am even scared to start the topic. So we start with the definition. What do you mean by integrity? What is the definition? Or rather, I will start with a two-step question. What is the difference between honesty and integrity? सोचिए आराम से 10 सेकेंड, फिर बताइए क्या लगता है. What is honesty and what is integrity? नहीं बताया, नहीं बताया नहीं रहे, मुझे आप ही बता रहे. लेक्चर भी आपका, डेफिनेशन भी आप. ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, Honesty मतलब ईमानदारी, और इंटीग्रिटी मतलब साथ में लेके चलना. that is unity. Okay, good try. 50% correct. Yes. Integrity we will see for a long time. So a person is for honesty. Okay. Honesty for temporary, but integrity in a long period of time is possible. Okay. और कोई कौन हवा में तीर छोड़ना चाहता है? प्रभु जी, हाँ जी. जो ईमानदारी है वो गलत चीज के लिए भी ईमानदार न हो सकती है, हाँ. और इंटीग्रिटी एक अच्छी चीज के लिए. अच्छी चीज के लिए ईमानदारी इंटीग्रिटी, बुरी चीज के लिए ईमानदारी ऑनेस्टी. नहीं मतलब ईमानदारी दोनों में हो सकती है. दोनों हो सकती है. अगर उसका नेगेटिव रोल है और उसको वो अच्छे से निभा रहा है. आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? Okay, good try, at least good attempt. Yes, Dr. साहब. Yes. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ honest. और जो मैं नहीं बोलता वो definitely करता हूँ. जो मैं बोलता हूँ वो करता है honest, और जो मैं करता हूँ वो मैं बोलता हूँ. हाँ, rather the opposite. Honesty is to say what we do. प्रभु जी आजकल बहुत टॉप साधना चल रही है और नहीं चल रही, दिस इज dishonesty. Integrity means to do what we say. Honesty is to say what we do. Integrity is to do what we say. और हमारे अंदर दोनों ही नहीं होती. जो हम बोलते हैं वैसे भी नहीं करते, और जो हम नहीं करते हैं हम वो इतना बोलते हैं, लेकिन नहीं भर भर के, मतलब लगे लपेट लपेट के. इसको बोलते हैं ना हिंदी में फेंकना. कल अबे चट्टू बोल रहा था ना, हम भले अच्छे डिवोटी नहीं बन पाए, अच्छा काउंसलर बन सकते हैं. आपसे ISKCON का कोई लीडर भी पूछना है ना, प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी साधना अच्छी करिए आप. सब हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, नहीं. So we speaking that Krishna consciousness is the only solution, just chant Hare Krishna. And Srila Prabhupada speaking that chanting Hare Krishna is the only solution, there is a big difference. That is the example of integrity. तो इतनी सारी जो क्वालिटीज लिखी है ना इंटीग्रिटी आगे बाजू बाजू, सिंसियरिटी, कोड एंड कंडक्ट, मोरालिटी, ट्रस्ट, वर्च्यू, बिजनेस, रिलायबिलिटी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ट्रुथ, कल्चर. And why is integrity important in one's character? क्यों होनी चाहिए? जरूरी है जो बोल रहा हूँ नहीं कर रहा. Why is it important? आप लोगों के लिए क्यों रखा गया है टॉपिक, बताइए.
जो बोलना है सेल्फ इमेज क्रिएट होती है. You get self confidence in yourself that okay, actually I can follow what I am saying. और कुछ डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन बढ़ता है. बिल्कुल भी आज एक लेक्चर सुना था बजरंग कृष्ण उदाहरण दैट अभी हमको करना क्या है दैट वी हैव टू गेट टॉट बाय वी हैव टू टीच समवन so in order to teach that is the main principle of our movement that is preaching so in order to successfully we need integrity so that the younger generation can get inspired 100%. Yes. और कोई हाँ किशोर. So that we don't deviate from Prabhupada. So that we don't deviate from Prabhupada, as good as determination that we don't deviate. Okay. Anything else? क्योंकि कुछ यहाँ पे जो मेनली बैठे हैं लोग ये सब कहीं ना कहीं बेस के मैनेजर्स या लीडर्स हैं. तो अगर यही लोग वो चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे जो ये लोग बोल रहे हैं तो फिर हाउ आर जूनियर. Exactly. That's how we win trust of people. That's the most important aspect of preaching. Prabhupada Maharaj always mentioned that preaching is not circulation of information but transfer of faith. Preaching is transfer of faith. Not just lectures from memory card, not just some reels from YouTube. रोजी में बहुत सारे आजकल तो इसको हमें क्या सभी प्रचारक है, हर कोई प्रचारक है, उसे बस ये नहीं पता कि कौन सी परंपरा का हिस्सा है. तो प्रचारक सब है. रोजी मेरा प्रीचिंग ग्रुप चल रहा है, 1-2 हज़ार लोग मेरे कनेक्शन में. अच्छा, ऑनलाइन तो कुछ भी चालू हो सकता है. That preaching is of no substance because there is no integrity in the preaching. Integrity builds trust. Answer आपके टॉपिक में छुपा है. 3 pillars of trustworthy character. First of all, building a character, that to having a trustworthy character, that involves integrity. हमें से सारे लोग ऐसे हैं ना कि बहुत सारे भक्तों की इज्जत करते हैं, दंडवत करते हैं, सबके साथ मजा नहीं आता. लेकिन ये सब नो कोई है ऐसा कि गुरु जी सभी बढ़िया, सब गुरु किस स्तर पर है गुरु जी, सारे वैष्णव गुरु हैं गुरु जी, ऐसा कोई? We have those selected devotees only where we get inspired, where we share our hearts. Why? Because of integrity. हर जगह से हम भी प्रेरणा नहीं लेते, हर जगह हम भी बात करना पसंद नहीं करते. ऐसा नहीं है कि दूसरों में इंटेग्रिटी वगैरह नहीं है, बट वी सी दिस ट्रेट इवन इन अवर सीनियर्स. देखते कि नहीं देखते क्या प्रभु जी पहले तो अच्छे थे, अभी पता नहीं प्रभु जी का क्या गड़बड़ हो गई, आजकल मजा नहीं आ रहा उतना. कभी एक्सपीरियंस किया इसमें? एक टाइम बहुत अच्छा लगता है, दूसरे टाइम लगता है कैसा हो गया. फीलिंग यस और नो? पहले अलग ही था यार, क्या मजा आता था, क्या दिन थे वो भी एक जमाना था. अभी क्या हो गया है, वीराना सुनसान अनाथ आश्रम से लगता है. क्या चल रहा, भक्ति कर रहे हैं तेरे ब्रह्मभूत परेशान आत्मा, दुखी हो जाते हैं लोग. Because this trait is lost. Especially for leaders who are preaching, who have become seniors, it is very, very important. Not just for base students, even for preachers who are preaching in certain bases, for temple presidents, for GBCs, for everyone this trait is required. लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये. जहां आपने ये फॉलो करना बंद कर दी, लोगों का भरोसा आपसे टूटना चालू हो जाए. You have done this with your seniors, so just imagine your juniors will also do the same with you.
I'll give you an example. हमारे बेस का ही देता हूँ. One devotee was asking me question. प्रभु जी हमें बाहर का खाना चाहिए क्या? What is the answer? नहीं. Fruits, juices, everything, these are exceptions. Okay, whenever you don't have something to eat, ये सब चलता है, समझ में आता है. Okay. Since it was night time, dinner, I generally don't take dinner. So devotees brought me a glass of hot milk. हल्दी वाला दूध कि प्रभु जी आपके लिए. आपने दूध मंगाया तो दूध पियो, ठीक है. So I was drinking milk. So when another devotee out of his faith, प्रभु जी टोस्ट खाएंगे क्या? पूछा नहीं, डायरेक्ट लेके आ गए. आकर लेके आ गए. So I took one. कि ठीक है, एक में हो जाएगा, रात को ज़्यादा ही लेना चाहिए. He went. So that same devotee came down. प्रभु जी आपने बोला तो बाहर का नहीं खाते. I just twisted the matter. I said मैं खा सकता हूँ, आप लोग नहीं खा सकते. These stunts are performed under expert supervision. Do not try this at home. Actually, the spirit was है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. ढूंढने तो नहीं जा रहे हैं खाने के लिए. But point to be noticed is people do notice each and everything. When we were in voice, हम लोग यही सोचते रहते थे कि प्रीचर्स अपने रूम में चले जाते हैं, करते क्या अकेले अकेले? बोर नहीं होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, सब लोग सोचते थे. ईमानदारी से बताओ कि ये लोग अकेले हैं, पूरा दिन अकेले में कैसे रह सकते हैं? हमें भी अश्विन वगैरह हम सब रहते हैं, अकेले पूरा दिन रहते हैं. जी मेरे को तो लगता था पिक्चर देखते हैं. हाँ, devotees feel this. मूवी देखते हैं, क्या करते हैं इतनी देर? देखो बच्चा बच्चे के साथ होता है, इतनी देर हमसे रीडिंग होती नहीं, हियरिंग होती नहीं. ये पूरे दिन कमरे में हंसने की आवाजें भी आती हैं. और अंदर आवाजें आती थी, तो ऐसा लगता है अंदर क्या बातें कर रहे हैं. कभी हंस रहे हैं, कभी सीरियस बात चल रही है. ये किसी के बारे में तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, डिसाइड करा जा रहा है कौन निकलेगा अभी. है कि नहीं? सबके मन की बात है. अब बदकिस्मत ये हुई कि हम खुद प्रीचर बन गए. तो पहली बार फेस नया लिया तो प्रभु जी आपके लिए प्रीचर हूँ. मैंने सोचा वो तेरी मेरे लिए लेक्चर हो, ठीक है भाई. अब सारे डिवोटीज आके देखते हैं उसमें, थोड़ा सा गेट खोलते देखते हैं, अच्छा हो क्या सही बात. थोड़ा सा गेट खोल के देखते हैं, गेट खोलने की आवाज भी नहीं है, अब सुराख से दिख जाए प्रभु जी हैं. हाँ क्या कर रहे हैं? लैपटॉप खुला है, क्या देख रहे हैं? डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं. एक समय पे बस कोई स्टूडेंट नहीं आता सुबह के टाइम कि उठाना है, कौन उठाए जा, तुम ये नहीं उठेगा, हम भी नहीं उठेंगे. Integrity to do what is said. The point is, with due respect and with time and age, facilities are required for some important aspects. Concept is people do notice these small things. इसलिए हमारा कैरेक्टर बहुत स्पॉटलेस होना चाहिए. देखो purposefully we need to stay with devotees. वो आएगा आगे traits of person having integrity. Again, many things are this. Part A, Part B, Part C, Part D. Who is a leader with integrity? ये कौन से लीडर है? महाराज युधिष्ठिर. These are the great leaders in Vedic literatures. But their lives were not easy.
when your life will be centered on values instead of pleasures, बहुत तकलीफ आएगी आपके जीवन। युधिष्ठिर महाराज was honest, first quality which is mentioned, thinking Duryodhana is my brother, कौरव मेरे ही तो भाई है। Now how many of you can accept brothers like Kauravas? हम कुछ जहर देके मार दें ऐसे भाई, है कि नहीं? थोड़ा बहुत भी हमारे छोटे भाई बहन करते हैं ऐसे ना, हम कुछ जहर देके मार दें कि मर जाए, चैन से तो मैं रहूंगा जीवन में हमेशा। युधिष्ठिर महाराज had that belonging with them. This is part of my family. कुछ होना नहीं चाहिए इसमें। And still he was honest. ऐसे लोगों से कौन ईमानदार रहता है? Therefore, Bhima's formula was tit for tat. है कि नहीं? तुम कमीना तो मैं महाकमीना। If you will fight, we will fight more. हम उस कैटेगरी के हैं। प्रभु जी चाह भी किसने किया? He started. Right? At least I am that category. ये छेड़ा तो फिर you will remember in your entire life किससे पाला पड़ा था। Yudhishthira Maharaj was not that kind of person. Therefore, he was the king. He had such qualities कि उनके लिए भगवान ने बेईमानी की पूरी दुनिया में। Krishna became peace messenger. He accepted Duryodhana's insult. Krishna himself cheated just because he wanted his devotee Yudhishthira to sit on the throne of Hastinapur. That was his quality. And Yudhishthira follows what he preaches. है कि नहीं? Because he accepted Krishna's will at every place, चाहे जंगल हो चाहे राजमहल हो, है कि नहीं? अब किसी का भी फोन बजा तो वो शाम को सबको पार्टी देगा इस ग्रुप को, दोबारा बजा तो वालों को भी दे दो। Okay. युधिष्ठिर महाराज concern was भगवान साथ में है तो जंगल भी सही है, महल भी सही है। लड़ाई के लिए कौन पीछे पड़ा था? भगवान को। पांडवस करो कि we don't want to fight. It's okay. Lord was again with them कि अरे you are क्षत्रिय, you should rule. है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज कॉन्सेप्ट था कि यार एक मांस के टुकड़े के पीछे कुत्तों के जैसे क्यों लड़ाई करी जाए? That was his value, that was his renunciation. Therefore, such leaders are called Rajarshis. They are administrative by their duty, but they are renunciate by their heart. And the most important quality was he used to follow what he used to preach. A very important quality. ये एकदम टैटू बना के लिख लीजिए। To build trust among your subordinates and among your seniors also, you have to practice nicely. Our seniority should not be on the basis of uploading of information कि अब हमारे अंदर बहुत जानकारी है, हमें ये पता है कि भागवतम के कैंटो के नाम क्या हैं, हर चैप्टर में क्या क्या है, एक आध दो श्लोक याद है, हर जगह हमने वही कोट कर दी, तो बस बेस के सीनियर, right? This kind of falsity will make you more and more insecure one day, because ultimately people will not trust you. एक चीज याद आई मुझे, एक मिनट। राधेश्याम प्रभु told this to us in a personal meeting. निकालता हूँ notes। तो प्रभु जी बता रहे थे, मतलब I was meeting प्रभु जी ने कहा, so he was telling how can we influence people. Yeah. So we control people based on 4 aspects. First is post position. कि हम बेस के इंचार्ज, बात माननी पड़ेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं तो हम प्रभु जी से कह देंगे।
प्रभु जी आएंगे, सबसे पहले हमें बताएंगे प्रभु जी इसने प्रोग्राम में गड़बड़ी कर दी है, बच्चों की स्वीट खा गया. This is post position. Second aspect of influence is personality. It can be positive, it can be negative. है कि नहीं? It can be taken in a spiritual way that person is spiritual. He is so pure that no one messes with him. He is such a good devotee. It can be also on a negative aspect. कल एक devotee मेरे से complain कर रहे थे. Even our ashram only. Ashram is same as base. है कि नहीं? Radha Prabhu used to tell full form of base, BACE is Brahmachari Ashram Covered Extension. बेस का वही होता है फुल फॉर्म. वन डिवोटी बस कंप्लेंट में कह रहे प्रभु जी ये डिवोटी है तो परेशान करता है. तो मैंने बोला कहाँ करता है, कुछ तो नहीं करता. अरे बोले प्रभु जी आपको थोड़ी करेगा. आपको थोड़ी करेगा, मरना है उसने. अब 2500 जंप रोप मारते हो, आधे घंटे डंबल करते हो, मिलेगा ही नहीं, सीबीआई भी नहीं ढूंढेगी उसे. आपको थोड़ी परेशान करेगा, हमें करता है परेशान. सो दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस. लोगों को लगता है ये आदमी बहुत बदतमीज है, शायद इसको बोले तो हो सकता है गालियां वाली दे, इसको रहने दो, इसके चरणों में अपराध नहीं करेंगे. ठीक है. इट कैन बी ऑल्सो इन पॉजिटिव स्पिरिचुअल spirit. Third important aspect of influencing is character. Like we have character of mother in a home. घर का लीडर कौन रहता है? Father is the leader. He earns money. He is an influential personality. But where do people share their heart? With mother. चाहे लड़का हो चाहे लड़की. लड़के को भी लड़की पसंद आ जाएगी, कहाँ बताएंगे? मम्मी को. लड़की को भी पसंद आ जाएगा तो मम्मी को. पिताजी तो यमदंड लेके घूमते हैं, मृत्यु को दंड देना चाहते हैं, तो कोई कुछ नहीं बताता. फिर पापा से कौन बात करे यार, मम्मी आप बता देना. ऐसा करते हैं कि नहीं? आई डिड द सेम. मम्मी मंदिर में रहना है ना, देख लेना तो. ओके. So this is influence on the basis of character. Because the character is very, very selfless. Automatically will influence people on that basis. And fourth is competence. Talent is so hard. Administrative abilities, influencing abilities, public speaking abilities. All four things combined together make a composite, wholesome leader. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है सब रॉकेट की तरह. So therefore, to influence people, and why do we want to influence people? To increase subscribers? मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब आएंगे? नहीं. We just want to preach. We are in a preaching movement. We are in a spiritual organization, not to become peaceful. ये अभी से याद रख लीजिए. अगर आपको शांति चाहिए चले जाइए ISKCON से. है कि नहीं? आपका जीवन बर्बाद होने वाला है अभी. In the sense that there will be so many services, so many responsibilities, and so much turmoil, so much disturbances. शांति में नहीं रहेंगे आप. प्रभु जी भजन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे प्रभु जी. और हम भक्ति में क्यों आए थे, आश्रम में क्यों आए थे? जी भागवत पढ़नी थी. घर पे बैठ भाएंगे, अपनी लाइब्रेरी में जाओ और घर पे बैठ के किताबें चाटो. है कि नहीं? LOC पे आके शांति एक्सपेक्ट नहीं करते. डायरेक्ट सीज फायर. So we are in a preaching movement. That's our goal. At least this we should understand. That is the mood of our acharyas, mood of our parampara.
And because of preaching movement, we are doing all. Otherwise, if we have to become renunciates, we would sit under a tree and discuss Srimad Bhagavatam like the Goswamis did. कोपिन और कांता पहन के चिल्लाते हुए भागते हम, हे राधे व्रज देवी के चल लेते। उज्जैन में ऐसा कोई घूमता दिखेगा, आप बोलोगे पागल हो गया ये। That was the level of Goswamis. We are a preaching movement. Worldwide, our mission is worldwide. We need to spread teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Worldwide, we need to spread the mission of Srila Prabhupada. And for that, we need to have this character having integrity. Otherwise, we will not be able to preach. कई बार जब हम जैसे अभी जैसे आप लोगों की पोजीशन है, कुछ लोगों के लिए आप सीनियर्स हो, कुछ लोगों के लिए आप जूनियर्स हो। हमें बस इतना देखना चाहिए, we see so many faults in our seniors many times, which are very genuine. Can we avoid fault finding? Yes or no? Yes or कौन बोलता है yes? We can avoid fault finding. Can we stop fault finding? हाँ, minimize कर सकते हैं उसको by seeing the greatness. Fault finding cannot be stopped because faults are there in everyone. भागवतम में लिखा है, कहाँ पे लिखा है? कले ओशन निधि राजन, ओशन ऑफ फॉल्ट्स। अरे आपको समुद्र में, आप बोल रहे हो आदमी समुद्र में डूबा है उसमें पानी ना लगे, ऐसा हो सकता है? जो व्यक्ति डूबा है गीला होगा ही होगा। There have to be faults in everyone. But what is the benediction? Asti hi eko mahan guna. That one great quality is Kirtana Deva Krishnasya Mukta Sangha Param Rajiv. That has to be focused. So if we can find faults in our authorities, और धीरे धीरे 2-3 साल में we get to know the structure of how ISKCON works, कौन है, तो हम धीरे धीरे हमको सब जगह गलतियां पता पड़ने लग जाती हैं। पूरी प्रेसिडेंट जैसा भी कर रहा है, महाराज जैसा भी कर रहा है, जीवीसी प्रभु थोड़ी लगता है चेंज करनी है नहीं। पर ये ISKCON में अच्छा नहीं चल रहा, तो आप जरा बताइए, बेस चला है, बेस के सिलेंडर नहीं आ रहा टाइम पे, तो ISKCON चला दिया। We do see faults. Now just imagine if we are seeing faults at such a high level, won't our juniors see faults in us? They will. And to gain their trust, we need to have impeccable. And this is leadership with no integrity, partiality and nepotism, cheating and deceit. Preaches one, practices something else. कौन है ये? दुर्योधन प्रभु। हमारी दोनों पर्सनालिटीज के कभी कभी हम उस साइड हो जाते हैं, कभी कभी एकदम इस साइड हो जाते हैं। डिवोटीज घबराते हैं ऐसे क्या हो, अभी तो सही था ये, सेकेंड ईयर तक तो सही था, थर्ड ईयर में आके ये जानवर कैसे बन गया, इसकी कंप्लेंट सब जगह से आ रही है, ये बेस पर रहेगा तो मैं इस बेस पर नहीं रहूंगा। हैं कुछ ऐसे लोग, याद कर लो मन में, पता नहीं होते हैं ना ऐसे नमूने। सेकेंड ईयर तक सब ठीक, थर्ड ईयर में एकदम सबको परेशान कर देगा, ऊपर नहीं नीचे सबको। These are two sides of our own character only, Duryodhana and Yudhishthira. And what happens? Subordinates start to lose trust. Superiors start to lose trust. And this lack of integrity will destroy the community, will reduce the preaching. It can go to such extent of subtleness जिसकी हम लिमिट नहीं नाप सकते. So actually we were to discuss this PPT, but I have prepared something else. We'll be discussing from a very
wonderful compilation. So this is the book being Srila Prabhupada Anugas syllabus from GBC College. So this is a course for the leaders. So I had this PDF, I read it, and it is very, very powerful book, very powerful compilation. So Srila Prabhupada is mentioning here in letters to his leaders, GBCs and temple presidents, what is the importance of integrity to follow what we are saying. Okay? So let's start with this. What is Srila Prabhupada saying? ध्यान से देखिए उसमें. One should try to see how much taste he has developed for chanting, so that one can remain alone, simply being engaged in chanting. So can we do this whatever level? नहीं. कोई कर सकता है? एक पांडव निर्जला का तो गिफ्ट हम पूरे साल मांगते हैं. प्रभु जी मैंने इतनी माला भरी, मेरे को कुछ नहीं दिया. एक दिन मैंने माला भरी तो क्या एहसान कर दिया था तुमने? And for us, what is the instruction of Srila Prabhupada? Padiye Gaurav. For a conditioned soul in a conditioned life, it is very difficult to concentrate the mind on chanting absolutely. Better to be engaged in preaching work. Better to be engaged in preaching work. Go ahead. That will make one gradually successful. Besides that, when we are actually engaged with the preaching work, we gradually acquire our spiritual strength without feeling. This letter to Shiva, what is Srila Prabhupada saying? If we are engaged in preaching in the guidance of authorities, we acquire spiritual strength without failure. So by engaging in preaching, naturally we will achieve perfection. That is mentioned in Srimad Bhagavatam, 4th canto. Daya sarvabhuteshu santushtayena kenava sarvendriyopasantasya tushyati ashu janana. Okay? Quickest way to please God by showing mercy to other living entities. तो मतलब बांटने लगे सब. Not that mercy, giving Krishna Consciousness. जो कि हम कर रहे हैं. आप सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. हॉस्टल जा रहे हैं, भले जबरदस्ती जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं. हमारी हालत वैसे ही, जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया है कि टुडे डिवोटीज आर सपोज्ड टू गो टू हॉस्टल. अरे यार, इनको याद था क्या मीटिंग में? चलो चले जाते हैं. बच्चों से मिल आएंगे. 5 बच्चों से मिलेंगे, बोल देंगे सबसे मिलाया गुरुजी 50 से हो गया. कोई आना नहीं चाह रहा गुरुजी प्रोग्राम. We are that kind of. But if we are engaged in preaching work, we will achieve perfection. It's very, very important, because that is the quickest way to please the Lord. That's the mission of the Lord. But in order to do that preaching, this preaching is not just going to hostels and colleges and doing programs. This is also preaching to the devotees inside our community. वो develop कैसे होंगे? Prabhupada mentioned in the next letter. Yes, as GBC member, your task is very responsible. आप में से कोई GBC है? GBC है? नहीं है, but all of you are in charges. This is for all of you. ऐसे नहीं आप बोलिए हम थोड़ी GBC हैं, अभी से क्या बता रहा आपको? अभी तो मजे करेंगे भैया. Preaching आप लोग देखो, बेस पे साफ कर. Prabhupada is saying, as a GBC member, your task is very responsible. Why? You must always keep yourself pure. And in this way, your preaching work will take effect. तो खुद को हमें उस लेवल का रखना पड़ेगा by following that integrity. Next letter is very, very powerful. पढ़ेगा ये? So as Read slowly. कौन पढ़ रहा है? हाँ, त्रिविक्रम. Read slowly. So as president, now you will be forced to advance in Krishna consciousness. This is ये पढ़ के चलना. So as base in charges. हाँ. Because you must always set the highest example yourself, and I think that this is Krishna's special favoring. This is Krishna's special favor on us. हमारे साथ होता ना, हम कुछ बनना नहीं चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना, शांति से जीवन चाहिए. प्रभु जी आज से आप इंचार्ज. ऐसे कैसे? प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं आता. लेकिन अचिंत गिरिराज प्रभु हंसने लगे. प्रभु जी अच्छे खासे मन में रह रहे थे.
जो भी सन्यासी आया, प्रभु जी तैयार सेवा के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, गुरु पूजा भागवतम, एकदम जीवन में मजा ही मजा है। एकदम से बॉम्ब गिरता है प्रभु जी पे, जाइए विदिशा में प्रीचिंग करिए। तो प्रभु जी को बताते घूम रहे थे, मुझे भगा दिया, मुझे भगा दिया, है कि नहीं? What's purpose writing? So as president, now you will be forced to advance, because when we become relaxed, we don't advance. We just sit at a place. आप सही है, सुबह आरती में जाओ, प्रसाद लेने जाओ, जीवन बड़ा सेट है अपना। गलत बात यह है कि आपका जीवन सेट ही नहीं रहने देंगे बस। गौरव प्रभु से इस्कॉन में एक चीज पक्के से मिलती है, चाहे भक्ति मिले नहीं मिले, लेकिन सेवा जरूर मिलती है कि नहीं? एक चीज इस्कॉन वाले गारंटी से दे सकते हैं, चाहे प्रसाद देना दें, सेवा। चाहे कोई आदमी इस्कॉन का हो या ना हो, हमारा उससे कोई रिलेशन हो या ना हो, सेवा। प्रभु जी थोड़ा आओगे क्या? कहाँ पे? अरे आ जाओ वापस, बाकी हम देख लेंगे, आ जाओ। कहाँ ले जा रहा है? भगवान के पास, भक्तों को किचन में। अरे पहले भगवान के पास, भक्तों के पास, सड़क पे, तो किताब डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ फोर्स्ड टू एडवांस। और फिर आपसे बोला था प्रभु जी आप इंचार्ज हो, आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मैं कब बना था इंचार्ज? तुमने ही बनाया। कुछ आता ना जाता, बोलो जय भारत माता, हमसे बोल रहा है हाईएस्ट एग्जांपल सेट करिए। मैंने बोला था कि मुझे इंचार्ज होना है, प्रीचिंग इंचार्ज होना थी मुझे। मैंने बोला था मुझे प्रीचिंग नहीं आती। किस के साथ हुआ ये? अरे प्रभु जी हम बोल रहे हैं, मैं नहीं करती, मुझसे नहीं होती प्रीचिंग। प्रीचिंग करने के बाद प्रभु जी आप ऐसे प्रचार करेंगे तो बच्चे आएंगे क्या? है कि नहीं? अरे हमने कहा था हमें कुछ नहीं आता है, फिर आप बोलोगे इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी। हम तो शांति से रहने आए थे, आपने बोला था भक्ति करो, पढ़ाई करो, जीवन संभालो। अब आप कह रहे हो इंटीग्रिटी, जो बोल रहे हो वो करो। दिस इज कृष्णा's स्पेशल फेवर। दिस इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। This is the beauty of devotional service. Therefore, devotional service is the highest process. बात समझ में आ रही है? क्यों? Someone is offering a plate of bhoga to the deities in base or in temple. What are we doing? Directly feeding the Supreme Lord. कौन करता है ये? राधा रानी, माता यशोदा। बस हमारी कॉन्शियसनेस वैसी नहीं रहती। माता यशोदा सोचती है कि मेरा खाना सब कुछ खा ले, और हम सोचते हैं सब कुछ खा ले। चैतन्य चरितामृत में there's past time, right? रघुनंदन, there's this boy, small boy रघुनंदन, वो गोपाल को खिलाते हैं, गोपाल खा लेते हैं। तो सोचिए हम बेच तक वो लगा है भगवान ने। राधा रानी, भगवान, ललिता, विशाखा, सबने एक एक हाथ डाल के खा लिया। प्रभु जी प्रसाद कहाँ गया? प्रसाद तो भगवान खा गए। Our service is the highest, but our consciousness is not the highest. So we practice this process to develop our consciousness. Therefore, this is society for Krishna consciousness. Service, actually we are doing the highest. Why Bhakti is the highest process? We get engaged directly in direct service in the Supreme Lord, for the Supreme Lord, in feeding Krishna and decorating Krishna, cleaning the temple, preaching Krishna's message, which the gopis are telling that this is the highest service. Gopis are admiring such preachers. Sochi, we are doing that service. Bhuvir Grinanti Bhurida Jana. हम उस लेवल की सेवा कर रहे हैं कि गोपियां हमारी फैन हैं। सोच पा रहे हो? हम लोग जो हर दिन ये सोचते हैं कि मैं ISKCON में क्यों आ गया, क्या मैं सही जगह पर हूँ? That level of service we are doing,
This is Krishna's special mercy in this age of Kali. Special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? Try to always see the highest purity is maintained in all respects. Become yourself very convinced of this Krishna philosophy. Be always preaching and trying to understand some basic points from different angle of vision. Keep the devotees in your temple always satisfied and jolly, and that will be your success. This is letter to Hridayananda Das Goswami Maharaj, very big leader of ISKCON, who translated and wrote purports for 11th and 12th canto, 10th, 11th and 12th canto. Very powerful speaker, if you hear his classes. Prabhupada ने कितनी सारी चीजें हैं, 3-4 लाइनों में लिख दी. Always see the highest purity is maintained in all respects. हर aspect में there should be purity. There should be highest service, best service possible. Try yourself getting convinced of the philosophy. समझ में आ रहा है? आप convinced हो पहले कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं? We should be convinced. Convinced people convince people. Remember this formula in preaching. If you are convinced, you can convince everyone. अब कितनी बार आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है प्रभु जी बच्चे नहीं मान रहे? किसके साथ हुआ ये? हम बोलते हैं प्रभु जी सुन ही नहीं रहे, प्रभु जी क्या करें? हमने बोला सुबह आ जाओ, आ नहीं रहे, माला करते नहीं. Are you convinced? Prabhupada asked his disciples, all sannyasis, GBCs, are you convinced Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Prabhupada directly asked. Prabhupada was giving lecture. Prabhupada used to give simple classes, always hitting on the basics. This is New Vrindavan, all leading sannyasis with their dandas sitting in front. Prabhupada asking, so are you convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Are you convinced of this fact? The sannyasis couldn't speak a word. हम बहुत कुछ बोलेंगे, एक ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्येश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. Are you convinced of this fact? He is the Supreme. There is nothing beyond Krishna. Mattah paratam nanyat kinchidasti dhananjaya. Are we convinced? That's why preaching doesn't happen. Are we convinced sense gratification will not give us happiness? None of us. Therefore, there is less preaching. समझ में आ रहा है? We ourselves don't get convinced. हमें लगता है कि यार बोल तो रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा तो होगा कुछ तो. इन प्रभु जी लोग का छूट गया होगा कुछ, इसलिए ये बोलते रहते हैं. We don't get convinced. In device training workshop, once we were having it in our camps, and the invigilator of the workshop was His Grace Radha Prabhu himself. तो भी device का पहला सेशन चल रहा है, एक फाइनल ईयर का डिवोटी थे, ऑल इंडिया वॉइस कैंप था वो. तो दिस सीनियर ही वाज गिविंग सेशन इन फ्रंट ऑफ राधे श्याम, जिसने डिवाइस बनाया है. उनके सामने एक सेशन दे रहे हैं, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? एंड ही थॉट इजी टॉपिक, हम तो दे ही रहे हैं, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? तो ऐसे हम तो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, करो जी ऐसे देना आता है. सो ही स्टार्ट्स, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड. आधा सेशन उसने निकाल दिया. एंड राधे श्याम प्रभु आस्क्ड अ क्वेश्चन, what makes you convinced of God? And he said, Prabhuji, creation implies a creator. No, 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 that point I have written. वो तो मैंने लिखा है बेटा. Creation implies a creator, law implies a lawmaker. डिवाइस पढ़ा ना तुमने पहला वाला? Organization, organizer, है ना, डिजाइन का डिजाइनर, वो तो मैंने लिखा है. What makes you convinced? Tell me one line that God exists. Blank, couldn't speak anything.
ठीक है, नहीं तो हमारी ये हालत है, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान पेलते रहते हैं। ठीक है, नहीं, कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज गुड, इनिशियली दिस इज गुड, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में दिस इज गुड, क्योंकि हमें भी पता नहीं ना, सुना और दिया, सुबह सुना और शाम को जाके हॉस्टल में घूम, दुनिया में बहुत दुख है, असली सुख इंस्पायर में है, बहुत परेशानी है भैया, वो सारी दुनिया दुखी है बहुत ज्यादा। आप लोग इंस्पायर क्लब ज्वाइन करो, हम आपको टेक्निकल ट्रिप करवाएंगे। कितना बेवकूफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, टैक्स पूर्ति, ये क्या वो क्या, we'll take you to a prestigious colleges certification course by professionals। कुछ काम की नहीं होती वो वर्कशॉप, आप लोग को भी मालूम है, वो कोई काम नहीं आती है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है सबको, भर भर के भर दिए जा रहे हैं, लगे अरे ले लपेट लपेट सब दिए जा रहे हैं, but we ourselves are not convinced, and when we will have that conviction, Srila Prabhupada had. When he used to speak, it was with such conviction, you are not this body, and his peace changed. Swamiji is speaking something very well. And Prabhupada used to say, this civilization is demoniac, always suffering, always disturbed. It went into their hearts. Yes, it is actually true. When Prabhupada talked to hippies, he convinced them. When Prabhupada talked to industrialists, celebrities, Prabhupada even convinced them, because he actually saw that they are suffering. Yeah. Just imagine if you are preaching to a Bollywood actress. Can you tell material world is suffering? How many of you will be convinced कि आज मैं इसको वैष्णवी बनाऊंगा? If you are preaching to, suppose if you preach to Ambani, कुछ काम का नहीं है तुम्हारा पैसा, सब चला जाएगा। उनको बस इतना बोलना है कि ये सब छोड़ो, मैं तुमको महीने के 2 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ फिर ठीक है, माला वाला क्या है, ISKCON वाले वैसे गरीबी में रहते हैं। That conviction is required, and leaders should have that conviction. How he will have that will come in the next letter. This is letter to Jagadish Prabhu. He was one of the GBCs at that time when Srila Prabhupada was in this planet. Yes, who will read this? Jai Shri Prabhu, पढ़िए। धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा। Simply become more concerned with increasing the spiritual content of our life. This is he is writing to a leader. What he is writing? Simply be more concerned with increasing money, increasing number of followers, increasing assets, increasing the spiritual content of our lives. And in this way, all other problems like management Will be easily solved. Therefore, Acharya's Vani is very, very important. कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? कोई कनेक्शन नहीं है. Increasing the spiritual content solve your problems of management. That's why Srila Prabhupada used to say boldly, Krishna Consciousness is the only solution. That was the meaning of chant Hare Krishna and be happy. Because when consciousness will rise to a certain extent, material problems will not trouble you. आप से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि जब हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही होती है या हम मंदिर में आते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अटेंड कर लेते हैं, we are not concerned did we get prasad also or not. How many of you have experienced this? Suppose जिस दिन मान लो किसी का इनिशिएशन हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, उस दिन आपको प्रसाद मिला नहीं मिला, हमें होश खबर ही रहती है, आज तो दीक्षा हुई। एक्सपीरियंस है, हमें पता नहीं था कि प्रसाद में क्या बना, पता नहीं क्या बना था उस प्रसाद में, पता नहीं। दोनों दीक्षा हुई थी, गुरु महाराज से बोला, ओ भाई साहब। And if we are not chanting properly,
If we are not reading, hearing properly, if our consciousness is tampered, even if we have a feast in front of us, क्या बना दिए बार बार मिर्ची ज़्यादा डाल दी इसमें, ऐसे पेट खराब हो रहा है मेरा, स्वीट बनाई नहीं, कितने आइटम बना दिए, ये नहीं खीरी बना देते साथ, पैसा बचाते रहते हैं बस, नॉनसेंस, बेस वाले तो वैसे ही हैं, घर ही चलाया था इससे बढ़िया, everything is said, consciousness is not proper. This is the job of a leader. That is integrity, which acharyas have mentioned that only solution in every problem is Krishna consciousness. Spiritual content should increase. Not that they can be solved by making some legal formula and having weekly meeting and talks. They will not be solved by legal formula, having big meetings, big talks. Experience है? बेफ की मीटिंग, इष्ट गोष्ठी, प्रसादम के बारे में, मेन्यू डिसीजन, मेन्यू क्या बनेगा, 2 टाइम होगा 3 टाइम होगा, चावल कब बनेंगे, रात में क्या होगा, प्रीचिंग क्या करें, फॉलो अप का डिवीजन, हर चीज मीटिंग and talks. Srila Prabhupada is saying nothing is going to happen by that. What should be done? Simply be concerned with increasing the spiritual content of our lives. This is the duty of an in charge, of a temple president, of a preacher, of a GBC. Overall leadership instruction Prabhupada is giving in his purport. है कि नहीं? नेक्स्ट लेटर पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सार्थक को रीड. Therefore, as a rigid principle, in every temple there should be class for hearing and chanting. Without hearing and chanting, to become leader it is impossible. Without hearing and chanting to become leader, it is impossible. इंचार्ज बनना, प्रीचर बनना, फैसिलिटेटर बनना, काउंसलर बनना, no hearing reading, that itself means you are not a leader. Next line पढ़िए. You can become leader in the material world, but not in spiritual world. Who is leader of the devotee in spiritual world? Srimati Radha. She's not an MBA graduate. है कि नहीं? बीटेक के बाद आए, हमसे MBA किया, राधा रानी सब मैनेज कर लेती हैं, and Vrinda Devi is the topmost manager. Only concern is Krishna's pleasure. That is ingrained in their consciousness. Without hearing and chanting, we cannot be a spiritual leader. Such powerful insights Prabhupada is giving from his letters. And that is what integrity is. If we don't follow what we read, if we don't follow what we hear, we are not a candidate who can be trusted. Our preaching will not be effective. It will not be effective. Now I'll ask from all of you, what can be different ways where we can hamper our integrity? क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं? In terms of a junior, in terms of all of your position, in terms of a preacher of base, in terms of a temple president, all of you different suggestion. क्या लगता है आपको इंटीग्रिटी कैसे हैम्पर, कैसे अफेक्ट हो सकती है? नहीं, अफेक्ट हैम्पर मतलब कम कैसे हो सकती है? By our limitations, like we should have set a good example for our sadhana, like we are seniors, we should report at 4:30. Like our health is not allowing it to report, we are at 5. We are saying to all students, what reporting time? 4:30. हमने मॉर्निंग प्रोग्राम वाली पीपीटी दिखा दी सबको, वॉइस वाली पूरी जनरल का एग्जाम वाला, who disciple वाला, you should report at 4:30. Preacher coming at 5.
कैसा लगेगा आपको? क्या चिंतन हो गया बताइए। ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया। नहीं, वो तो आप प्रीचर हैं तब। आप बच्चे हैं और प्रीचर को 5 बजे आ रहा है। अरे यार ये क्या बोलते हैं वो? आगे साथ सीधा मतलब ये क्या बोलते हैं जब कुछ बोलते हैं वो कुछ फॉलो नहीं करते। हाँ, ये क्या क्या मतलब है? हम माला करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आए बड़े साढ़े चलते इनकी ऐसी की तैसी, बोलने में क्या जाता है। फिर हम एक फ्रेंड को बोलते थे आते क्या है यहाँ पे। फिर हम इधर उधर जूनियर्स को बोलेंगे देखो प्रभु जी नहीं आए कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मन में सोचेंगे वैसे ही नाला के क्यों होता है ना, हमारे जूनियर्स अफेक्ट हो। You should understand, so many people, their trust is dissolved. And more reasons. प्रभु जी बोलते हैं चैंटिंग बैठ के करना चाहिए, फिर चल के करते रहते हैं। प्रभु जी गार्डन में जाके फूल तोड़ते तोड़ते माला करना है। Of course, without any genuine reason. किसी का मेडिकल भी हो सकता है, डॉक्टर has said that you should walk and more. प्रभु जी बच्चों को तो बेस में बैठावे, अब प्रभु जी निकले गार्डन में घूमने। ठीक है, हम भी प्रीचर बन जाएंगे, हम भी यही करेंगे। अभी तक जब तक फाइनल ईयर में सह देते हैं तब तक जूनियर हैं, क्या करें। एनीथिंग एल्स? और मिस्टेक कर देते हैं उसको मतलब कवर करते हैं। लीडर है कोई। हाँ, when a leader covers mistake of his followers. I tell you actual experience. There was one devotee he missed his chanting of 16 rounds. He asked his senior, his counselor, प्रभु जी माला कल हुई नहीं, 4 माला छूट गई because I was very tired. सुबह हमेशा वो जाया करती थी. I just did 12. I just did 12 rounds, 4 rounds were missing. I missed 4 rounds. Prabhuji, what should I do? Counselor said, I चलता है कभी कभी. Real incident I'm telling you. Reality. कैसा लगा सुन के? धूमता ना. ये क्या था? Fish. What is this? Now that devotee who missed chanting, what he will feel towards his senior, या तो वो सोचेगा कि मेरा काउंसलर ही मर्जी है, या वो ये सोचेगा अच्छा चलता है क्या, अब तो हर हफ्ते छोड़ेगा मैं. And what Prabhu ji will say? तो बोलो राधे राधे, चलता है, no issue. और कुछ? हम बोलते बाहर नहीं खाना चाहिए, प्रभु जी गुरु कृपा बैठे हैं, गुरुदेव की कृपा ले रहे हैं. प्रभु जी ऐसे कहते है कि नहीं? महाराज जी आप भी, बाहर के लोग तक बोल देते कभी कभी, अरे महाराज जी आप भी. You understand? So leadership need to have that impeccable trust. Otherwise, trust is lost within seconds. If you see, when your senior or your preacher, he gives you some task, you do it. And when he is given task by his authorities, he doesn't do it. कैसा लगे? क्योंकि बस हम पे ही झाड़ते रहते हैं, खुद तो कुछ वैसे भी नहीं करते. Right? We move on with the PPT. PPT में बहुत कुछ है. Integrity की definition. कहाँ गया यार? Okay. Aligned values and behavior of integrity. Actually इस टॉपिक के 5 सेशंस हैं, टोटल 7.5 या 8 घंटे.
हमारे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो आधी रात हो जाएगी कवर करते करते। आपको देखकर ही समझ में आ रहा है so much content is there. Aligned values and behavior of a person, of a leader who has integrity. First, sticking to word even in danger. How many of you experience when there is some danger, when some service is disturbed, तो आपको ऊपर वाले जो सीनियर थे या प्रीचर थे, गलती उन्होंने करी और जब उनकी अथॉरिटी उनसे बोला क्या हुआ, अरे वो तो इनको बोला था इन्होंने करा ही नहीं। सबके सब नालायक बच्चे हैं आजकल, कोविड की जनरेशन ही ऐसी है, नीचे पहुंचा दिया सब कुछ, क्यों तो इन लोगों ने नहीं किया, मैंने तो बोला ही था। As soon as danger comes, मैंने एकदम पीछे। So if you are at the position of a subordinate, how will you think of that leader? अब दया, कैसा आदमी, हमको बताया ही नहीं। You understand? Even there is difficulty, that person should stick to his values. Either there is difficulty in doing the service, or there is some mistake in the service, it couldn't happen. Leader should be, he should stick to his words. Example is given of Bali Maharaj. Okay? He got to know this child is Vishnu. बलि महाराज ने बोला बोल दिया तो बोल दिया, 3 पैर भूमि तो दूंगा। शुक्राचार्य said no, he will cheat you, let him cheat you, no problem, it is anyways it is Vishnu. देवताओं का भगवान मेरे से भीख मांगने आ रहा है, उससे बड़ी क्या बात है। And Bali Maharaj was a devotee himself, so that integrity made him suffer. He fulfilled his promise, gave everything. Still, Lord binded him, but he still glorified. Again, still glorified. So even in turbulent situations, we should not change our mindsets, change our ideas, change our opinions. कभी-कभी कैसा होता है, what sometimes people do, they adjust the principles accordingly, time, place, circumstance के हिसाब से, है कि नहीं? Suppose, actually I am having many examples in mind, कौन सा बताऊं समझ में नहीं आ रहा। There was this one devotee in our voice, was our senior. So always when there were classes for Sadhana time, always used to mention, क्या करना है शादी करके, सब मोह माया है। सुना बहुत बार हमारी धुलाई होती है। सेंस कंट्रोल कैसे होगा जब सेंस ऑब्जेक्ट ही सामने रहेगा? इंद्रिय का विषय सामने है, इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करेंगे? Therefore we should join and become brahmacharis. And we were second year students, हम लोग लगता ठीक है देखेंगे बाद में, वही प्रसाद लो, क्या बढ़िया प्रसाद होना, प्रसाद सारो डांस वांस करो, ये शादी वादी देखेंगे, हमसे उसी कौन कर रहा है, देखेंगे बाद में। And he joined temple, stayed for 2 years, left ashram. Still a devotee, initiated, and then I came in temple, became a brahmachari. हमारा कोई कंसर्न नहीं था, भाई इधर भक्ति करो, मजे करो, सेवा करो, प्रचार करो, जैसा बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे। And then he comes to me, प्रभु जी, आश्रम is not practical. मैं बोला क्या हो गया? बोले आपको क्या लगता है, आप आश्रम में खुश हो? मैंने कहा बहुत ज्यादा, तूफानी मजे चल रहे हैं, इतनी सेवा, इतना प्रचार, इतना कुछ करने वाले, so many opportunities to serve spiritual master. तो प्रभु अभी लग रहा है बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आश्रम is not practical in this age of Kali.
तो प्रभु जी आप पहले तो कुछ और बोलते थे, नहीं नहीं वो सबके लिए नहीं था। मेन तो यही है कि आश्रम ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच अ पर्सन? लेकिन थाली का बैंगन, बेबैंदी का लोटा, ये कहावतें याद आ रही है कि नहीं? तुरंत उलट गया। और तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। Switching positions. Can such person be trusted? No, he can anytime he can change his opinions according to his own adjustments. Leader should have predictable behavior because he makes decision on the basis of principles. Life of leadership is principle centered, not pleasure centered. Remember this, write this. It is not pleasure centered but principle centered. है कि नहीं? 100 these कैसे करेंगे? Impeccable character. Impeccable मतलब there is no spot in the character. अर्जुन शब्द का मतलब पता है क्या होता है? भगवद गीता किसने पढ़ी है? बाकी ने हाथ भी नहीं लगाया। What is the meaning of the word Arjun? भागवतम 4th canto, हाँ पढ़ी नहीं, ऐसे ही निकाल दी हमने, हैरी पॉटर जैसे। Meaning of the word Arjun, remember that. Meaning of the word Arjun is spotless. भगवद गीता आ गई, दोबारा पढ़ना है नहीं? Remember the target of Visual Jayapata Goswami Maharaj, 100 सबको 100 बार पढ़िए। Meaning of the word Arjun is spotless, so a leader should have that spotless character. Difficult, very difficult. It level by level it increases more and more. For a 3rd year student who is senior to 2nd year students, इसकी डिग्री ज़्यादा नहीं रहेगी. For a sannyasi, it is to the maximum degree. Srila Prabhupada used to say one can only become sannyasi. Sannyasi should be so much sense-controlled that if he is in a room full of naked women, he is not disturbed. कोई ऐसा? Anyone? Volunteer? नग्न स्त्रियों से भरा रूम और मन में वृत्ति ना आए। सोच रहा हूं ऐसा, इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं होऊंगा तो क्या होगा। Can we imagine? That should be the character of a spiritually realized person, at least a spiritual leader. हम नहीं है वैसे, इसलिए हमारे फॉलोवर्स भी कचरा हैं। लेकिन पापी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेलम। हम फर्जी, हमारे 3rd ईयर वाले फर्जी, हमारे 2nd ईयर वाले फर्जी, सब फर्जियों का बेस। फिर जाते हैं प्रभु जी अगर बेसिस फर्जी, इसमें प्रीचिंग नहीं हो रही, क्या करें प्रभु जी, क्या करें प्रभु जी, बच्चे नहीं बढ़ रहे, साधना अच्छी नहीं हो रही प्रभु जी। फिर क्या करेंगे प्रभु जी जब तुम फर्जी? Impeccable character. It's very, very difficult to make actually. Now, this can go to any extent. It can be temptation, can be in terms of eating, in terms of speaking. कुछ भी कभी भी मुंह से निकल जाना, कभी कुछ भी खा लेना, कुछ लिमिट ही नहीं, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी चले जा रहे हैं बकरी जैसे। 10 बजे भी कोई लाके दे दिया मिठाइयाँ, ला आन दो प्रभु जी, भगवान का ही प्रसाद। प्रसाद हम किसके लिए होता है? हम भक्तों के लिए। आन दो।
is a circumstance. चैंटिंग तो बीट बैग तो नहीं उठाते हम सुबह के अलावा कभी. We can understand our level by this. प्रसाद सबके लिए है, कभी भी आए तो ले लो. हरिनाम 16 माला था 16 माला बोला है ना प्रभु. प्रभु जी प्रभुपाद ने कितना बोला था? 16 माला खत्म. बीट बैग अलमारी में. फिर मिलेंगे कल. तब निकलना नहीं बोलना है. क्या हम बीट बैग उठाते हैं दोबारा जैसे हम मिठाइयाँ उठाते हैं? भागवतम उठाते हैं दोबारा जैसे मिठाइयाँ उठाते हैं? If Lord's mercy is in prasadam, it is in Vedic literatures also. It is in service also. Then we become bleached in our character. People won't trust us. In terms of speaking, कभी भी कुछ भी बोले जा रहे हैं. In terms of following schedule, no schedule. जब जागो तभी सवेरा. महाप्रभु के वक्त थोड़ी मंगल आरती करते. चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भक्त लोग मंगल आरती करते थे? नहीं लिखा. अरे सोते ही नहीं थे. पूरी रात कीर्तन, डांसिंग, चैंटिंग. That's called impeccable character. Actually, many things can be discussed in this. Okay? An example is given of Haridas Thakur. Therefore, Haridas Thakur was a Muslim, still called as Namacharya. Okay? So time is up. What should we do? Just 20% of the topic. हैं? चल रहा है? हरी बोल 5:45 टाइम है. पक्का? 5:45. Second is right motivation in action. इसका अपोजिट हो सकता है wrong motivation in action. Who had wrong motivation in action? कि वो करना कुछ चाहता था लेकिन उसके पीछे का मोटिवेशन कुछ और था. Think in भागवतम और रामायण और महाभारत. Yes, दुर्योधन ने made house of लाक्षागृह बनवाया था. पांडव को भेजा कि जाइए छुट्टी मना के आइए. मोटिवेशन क्या था? जिंदा जला देंगे सबको. Therefore, even Karna and Shakuni did not trust Duryodhana. You know that? Even they did not trust. It was simple filmy politics. अगर दुश्मन एक हो तो आपस में दोस्ती. Even they did not trust Duryodhana. उन्हें पता था कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है. संकी. Even they trusted Yudhishthira more. That was Yudhishthira's character, and that was Duryodhana's character. Similarly, Ravana. He showed himself that he came for begging alms, but wanted to kidnap Sita. Therefore, even Ravana's wife did not trust Ravana. Ravana's brother did not trust Ravana, but they trusted Hanuman. So that's called when there is right motivation with action. है कि नहीं? The word series. Please repeat after me. आपने आचार्य कहे न करे प्रचार. प्रचार करे न केह न करे नाचार. Second line belongs to people who do preaching, but they're not doing that amount of thing. So we should ask ourselves, are we doing what we are mentioning and following? जितना हम बोलते हैं क्या हमारे जीवन में उतना हम करते हैं? सबके लिए जवाब नहीं है, नहीं होता. It's not about pure egotism. If we speak about Radha Rani always thinks of Krishna. उस level पर नहीं जाना. But the basic things which we are speaking to new people in general, are we able to do it?
Therefore, we don't have that power to preach. That which Bhakti Sanskrit Thakur used to mention, Pran Achajar Sahetu Preacher. This Pran is not enthusiasm. किसी लोगों में बहुत प्रीचिंग की आग लगी होती है, प्रचार करना बचाना, ये कॉलेज वो कॉलेज, हर कॉलेज में छिया पत्ती खेल ली, टेस्ट एवरी कॉलेज, रिजल्ट सब जगह है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा. क्यों? नो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन. I'll show you एक मिनट. What a picture. This verse is Sri Chaitanya Charitamrit Madhya 24. Read this. यहाँ से पढ़िए. The Chaitanya Charitamrita chapter Madhya Leela chapter 24, the 61 explanations of the Atmaram verse, text 98, purport last paragraph. पढ़ो मुझे तो. To make a show of devotional service will not help one. One must be a pure devotee following the devotional process. Then one can convert others to devotional service. क्या करना पड़ेगा? To convert others, one must be a pure devotee, following the devotional process. pure devotee. ऐसा नहीं, pure devotee बनोगे आप थोड़ी follow करिए. Following the devotional process. Even if we are not a pure devotee, but we should be following the devotional process strictly. Only then one can convert others to devotional service. अब समझ जाइए कि हमारे यहाँ भक्ति अच्छे से क्यों नहीं चल रही है, जूनियर्स भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, बेस में भक्ति का माहौल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? We are not doing. Go ahead, Mother Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu practiced devotional service and preached. अपनी आचारी भक्ति करेला प्रचार. This is the most important line. Remember it. If a preacher behaves properly in devotional service, he will be able to convert others. Otherwise, his preaching will have no effect. His preaching will have No effect. no effect. कभी कभी मन में आया आप लोगों की हम इतना कुछ हमने किया है. We do so many one-time programs, DY, so much follow-up, faculties का follow-up कर रहे हैं, cultivating faculties program we're doing. So many programs in base we are doing. So many guests are coming. You know, why people are not becoming serious? Is this your experience sometime? कितना कुछ कर रहे हैं तो कुछ होता ही नहीं है यार, कैसे लोग? Why? To make a show of devotional service will not help. So what are we doing currently is show of devotional service. धोती कुर्ता तिलक, 12 तिलक, ओम केशवाय नमः, नमः 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 नमः, और everywhere white धोती कुर्ता, bead bag, कंठी माला. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स प्रभु जी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ऑफेंस प्रभु जी. हो गया भक्ति. To make a show, if we are not serious, we can still be devotees. Gradually we will become pure. But if we need to preach, then show will not work. समझ में आ रहा है? हैवी हो रहा है? क्वेश्चन, जैसे तो देखा है कि प्रीचिंग विल हैव नो इफेक्ट, तो वैसे कि प्रभुपाद जी से पहले बहुत सारे बॉडी मठ के सन्यासी प्रीचिंग के लिए गए थे, तो क्या कैन वी से दैट दे वर नॉट गुड इन देयर साधना, दैट दे वर नॉट सक्सेसफुल, और इट इज द विल ऑफ कृष्णा कि किसको सक्सेसफुल करने के लिए? Yeah, see, they were not impure in terms of the sadhana. They had some results, but they didn't follow the
will of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in terms of collective management. So ultimately, Guru's instruction is not followed, and if Guru's instruction is not followed, there is no empowerment. So see, even if we are not devotees, if we go outside, we can influence some people. बाहर के लोग भक्त नहीं है फिर भी तो चेले बना ही रहे ना. So what is that? Talent. There are many devotees not even chanting rounds. कर लेते प्रचार. ISKCON सबसे बढ़िया है, महाप्रभु सबसे कृपालु है. आ जाओ भंडारा चल रहा है, लोग आ भी जाते हैं. They are spiritual, but he'll make devotees like himself only. So Gaudiya sannyasis were not impure, they were not insincere, they were very scholars. Prabhupada used to admire them. Prabhupada से भी ऊपर की चीज थी. But Prabhupada followed spirit of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as it is. Collective management going to the West. Prabhupada to the West. Struggled there. He followed desire of, instruction of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And when they went to the West, they didn't go to America. They went to Europe, in London, Germany, and then they came back. And they said to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Guru Maharaj, your instruction does not work. ये आपको सेमिनार में नहीं बताया होगा कृष्ण कृष्ण. This is out of syllabus. Ardisha. So they said to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that Guru Maharaj, your instruction does not work. Saraswati Thakur was very, very dissatisfied hearing this. लगा कि हाँ इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, it's okay, but they said your instruction does not work. And Prabhupada was waiting, when will I get time, I'll do this. Prabhupada struggled, and was any problem in instruction? No. Therefore Prabhupada became Srila Prabhupada. Just one follow. क्या ऐसा भी होता है कि मतलब कि Krishna wants that only the preaching is successful at one place, because like we see many devotees are trying to preach in different cities, but only some are able to establish the center, but not everyone. Some have to come back also. Is it also the case? So क्या ऐसा भी होता है मतलब Krishna wants then only it is successful, because devotees are good, they are chanting here also, but they are not able to establish something. Some people are able to establish. Yeah, actually, भगवान पहले से सिलेक्ट कर लेते क्या कि इसी को बनाएंगे बस, ऐसा है क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता. Whoever practices religion, preserves religion, religion preserves and protects. ऐसा नहीं भगवान सिलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं हम केवल इस कॉलेज वाला बेस है ना, यही पढ़ना चाहिए. Right? It's not like that. See, during Prabhupada times, preaching in US was an explosion. America में खतरनाक preaching होती थी, and there was no preaching in India. Handful of disciples. Prabhupada had to send American disciples to India for projects. He sent Jayapataka Maharaj, Adityanand Maharaj for Mayapur, Viraj Martha Krishna Maharaj for Juhu, for Vrindavan. Now, there is no preaching in the United States, and there is tremendous preaching in India. भगवान का सिलेक्शन चेंज कैसे हो गया? Depends on people. I have been to United States, very less preaching. Same devotees, they are everywhere in all festivals. जो आपने विदेश के कीर्तन वगैरह सुने होंगे ना, सुने क्या? अच्छा तो गोपी माता जी, अमल हरिनाम प्रभु, विश्वंभर से. We saw them in everywhere. New York, Atlanta, Alachua, Tampa, everywhere in Rath Yatras, वो same group. सब जगह वही रहते हैं. Less devotees. Only Indians are catching. But now India is catching pace. And Prabhupada was there was only one devotee in Russia. Prabhupada is left, there are so many devotees in Russia. In Mayapur there is English, Hindi and Russian colony itself. Bhagwan select nahi karte. There is this material world, things go up and down, but wherever devotees will practice purely, there will be effect. So Bhagwan select nahi kar lete. Of course, to some devotees, Krishna selects also, because those devotees only will show that highest example of surrender, like Srila Prabhupada. They will not take pada. So
It's not that Krishna just suggests कि हाँ ये इसी को बढ़ावा नहीं. He has that qualities, that devotee has that qualities also. Yes, any other question? Any other question, comment, reflection, correction? क्लास का काम है भाई. Time हो गया? हाँ जी, अच्छा, राज प्रभु, yes. तो जी हम बब्बर सेठ की औलाद है. नहीं वो तो वही काम करना है. वही काम करना है. Yes. So actually we should preach vigorously. We should have that fire. And for that, before ऐसा नहीं कि बस प्रभुपाद और भक्तिदास सरस्वती ठाकुर जैसे कैमरे के सामने थोड़ा पड़ी करते जाके उस पूरे समाज सबको गाली देंगे और withhold them rascals, you nonsense. Become good devotees first. What kind of integrity and honesty Srila Prabhupada had? Simple things he used to say and people were convinced of Krishna consciousness. और हम इतना कुछ बोल देते हैं लोग समझते ही नहीं. ऐसी फीलिंग है क्या? इतना कुछ बताते हैं लोग समझते नहीं. प्रभुपाद ने छोटी मोटी चीज बनाई थी, लोग जीवीसी बन के कंट्रीज में चले गए संन्यास वगैरह लेके. इतने डेयरिंग. हमारे वाले 16 माला नहीं कर रहे. हमारा ही नहीं कर रहे. 4 अगले साल 6 अगले साल 8 पास आउट हो गया तो रोज 10 12 16 पे आया तो 20 बच्चे हो गए. बढ़ाएंगे 4 साल में devotees Srila Prabhupada के तो संन्यास Prabhupada they become GBCs and gurus. है कि नहीं? तो they were very very sincere. Actually Jayapataka Swami Maharaj got sannyas in 1968. No sorry, 1970. Radha Swami. His age was 20. कोई 20 के नीचे है यहाँ पे? At the age of 20, introduced in 68, sannyas in 1970 on Radhashtami, sent to Mayapur, Calcutta. Prabhupada said, "This is land of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Take it, develop it, enjoy it." Instruction देख रहे प्रभुपाद कैसे देते थे? हमसे बेस नहीं चल रहा, 15 लोगों से मिलके. Prabhupada saying, "Take it, develop it, enjoy it." Jayapataka said, "Prabhupada, I am too young, just 20." Prabhupada said, "Don't be bodily conscious." Imagine the amount of responsibility it took, the amount of hard work they did. Again, we don't need to read scriptures so much. इतना करने की जरूरत नहीं है. Just imagine the hard work of Srila Prabhupada and his disciples. When they came to Mayapur, it was rice fields. Now look at Mayapur, it looks like a city. How much hard work they must have done. Maharaj used to go to every village just with his big kartals. If you have seen that old photo, when Kirtans, villages came, he gave initiation to the whole village. That's how preaching started. In villages, everywhere, traveled many examples like that. Srila Bhakti Swami Maharaj, Srila Gopal Krishna Maharaj. And this was in India, in the Western countries, Sri Niranjan Maharaj, Indra Maharaj. How much struggle they have done. Just contemplate on that, and then we feel grateful. हमें तो बना मिल गया, बिल्डिंग में बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं. उसमें भी कंप्लेंट है कि ज़्यादा हो रही है, पार्टी है थोड़ी. We will have that kind of spirit, then actually we'll understand what we have got. I was reading diaries of His Holiness Indra Swami Maharaj, as a traveling preacher. After such a hectic schedule of 6 months traveling, preaching, Middle East countries, Russia, so many countries, नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने. And finally one day, he sits on a swing, झूले पर बैठते हैं, and starts to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Chant नहीं कर रहे. मतलब ऐसा नहीं पिक्चर से देख रहा आज तो हम नेटफ्लिक्स से. Sitting and chanting, then Bhakti Vringovi Maharaj comes. Maharaj, we need to go to another program. I need to chant. I need some rest. Bibikun Maharaj says, Maharaj, no rest for you in this lifetime. इस जीवन में आराम नहीं है. आराम आप अगले जीवन में करिएगा. अभी preaching करते हैं. And then Maharaj left his video. Okay, let's go.
So both of them traveled with car. Another program. देखो हमें पता है हम नालायक हैं और बहुत अच्छे से नालायक हैं, आलसी हैं, लेकिन चटोरे हैं, प्रसाद साथ चाहिए बस, लेकिन इधर उधर लड़कियां देखते रहते हैं, हाँ ये बड़ी बढ़िया है, हमारी खराब है. But our inspiration should be top class. Our meditation should be top class. What kind of acharyas we have got, what kind of present gurus we have got. Our acharyas, our parampara so glorious. We are in connection to that parampara. हम भले नालायक हैं, लेकिन हमारे फैकल्टीज अच्छी हैं. Just follow them. Just thinking of that will become very grateful. I am at least on a good path, the best path, and I'll achieve perfection. And I struggle the whole life. I just do whatever my gurus have said and whatever they have achieved, I'll just try to follow and preserve their culture. That's it. इतना थोड़ा विचार अगर हम कर लेंगे, हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे, will always be enthusiastic. ठीक है? Self inspiration इसको बोलते हैं. चैतन्य चरितामृत mentions this. यदि श्री चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार. इसके पहले वाला वर्ष ये है that avoid dry logic in understanding the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. लॉजिक से क्या समझेंगे? महाप्रभु, how Mahaprabhu delivered जगाई मलाई. Now explain this by law of karma. It is just not possible. Dry logician can never understand mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. But यदि श्री चैतन्य दया करह विचार, just imagine that mercy of Chaitanya Mahaprabhu. What we have got. विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार. And if we contemplate on it, there will be miracles in our life. We will do miracles, there will be miracles in our life. Just keep following this acharya. मैं एक चीज बोलता हूँ personally, it is not in this topic. We want to dedicate life for a purpose. It can be either family or a girlfriend or wife or children or parents. Now these personalities we have got. Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the present acharyas who are still working hard day and night with their sweat and toil preaching Krishna consciousness. Don't they deserve our lives? Yes or no? These personalities, we should give life for these personalities or not? जिंदगी अगर कुर्बानी करनी है तो इन लोग के लिए करो ना, है कि नहीं? People sacrifice their lives for just foolish interest of love. प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, फालतू आदमी है. गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, नस काट ली, दारू पीने लगे, देवता सब, क्योंकि लड़की छोड़ के चलेगी. Human life is so cheap. Or our life should become glorious by dedicating our lives to our spiritual masters who are still struggling. Okay? There was still this update 2-3 days ago. Sri Devotee Swami Maharaj is undergoing surgery. Discovered amnesia, blood cancer, blood ही खराब हो गया. Eyes are blurry, आँख से दिखना बंद हो गया. And many more things. Stomach is not working. पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा है. Body is not working. And still from Calcutta and Mayapur, he went to attend bureau meetings in Ahmedabad. In that condition. So if we see such examples, don't you feel like crying? ऐसा कोई कैसे हो सकता है? अरे we should sacrifice our lives for such people. Okay? Then there will be no need of telling integrity, maturity, non-envy, अच्छे से भक्ति करो, क्या करो, किस लिए आए हैं, क्यों जी रहे हैं. See, we should accept we are insincere. Okay, we are insincere, we are lusty to the topmost extent. So natural. We are fallen. Okay, yes. पतित नहीं होता तो कलयुग में क्यों आते? वो भी कोविड वाली एज में, जहाँ पे इंटरनेट पर हम लोग
accept it. But at least we got to see such stalwart examples in this Gaudiya Vaishnava Parampara. So at least we can desire to give our life for all of them. At least we should struggle to become sincere for all of them. What greatness will achieve in life even if you dedicate your life to get married to a Bollywood actress? What great will achieve? बोलने में तो आसान है, अरे प्रभु जी कुछ नहीं, आप जो बोल रहे हो वही सही है, मजा तो यही है. We should not just speak कि प्रभु जी बस भक्ति एकदम आप जो प्रभु जी, अरे work hard for it, struggle for it. है कि नहीं? परिवार चलाने के लिए, बीवी को गिफ्ट दिलाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, नींद हराम हो जाती है कि नहीं? बाहर में जितनी गालियां खाते उतनी श्रील प्रभुपाद के ISKCON के लिए खाइए. नींद हराम करनी तो भगवान के लिए करिए. We should have struggled. If we would bring material world, we would struggle or not? Maintaining families, house loans, car loans, sedan loan, SUV loan, so many struggles, so many choices. Do that struggle for Krishna. Krishna is very far, Prabhupada is not there. At least shouldn't we struggle for such examples in our lives, which we are seeing? That's it. That should be the objective of life. एक बार डिसाइड हो गया बस काम खत्म, अभी कुछ नहीं जीवन. That should be the spirit, and we will have that spirit. This spirit will naturally attract people because we'll be distributing mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Then actually we'll become Babbarshya. Okay? Okay, so time is up. Last question, yes, sir. लास्ट 8 है प्रभु जी. नहीं लास्ट. बाकी आप कैंप के ऑर्गेनाइजर से पूछिएगा. प्रभु जी जैसे हाँ ये इतना ऐसा लेक्चर वगैरह सुना, सब लोग इधर पे लीडर वगैरह ही मतलब काइंड ऑफ बन रहे हैं वैसे. तो इतना सब सुना, तो सुनने के बाद में लग रहा है कि पहले भी बढ़िया ही चल रहा था सेकेंड ईयर में कि माला कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, इतना टेंशन वगैरह लेना तब नहीं पड़ता. तो वैसा ही कर लेते हैं, मतलब जो छोटी मोटी सेवाएं रहेंगी वो करके कंटिन्यू कर लेंगे और हम किसी और को मौका देते हैं कि ये भक्त लीडर बने, तो चल जाएगा मतलब फिर भी. So there are two kinds of mentality in this. First is servant mentality. The others should become greater than me. This mentality is not a problem, but we should also become more responsible. सारा खाना घर के भाई बहन खाने चाहिए, मैं तो मम्मी का दूध ही पीऊंगा. So this is humility or irresponsibility? Natural irresponsibility. If we are grown up, become more responsible. सेकेंड ईयर में ये क्लास नहीं सुनाई होगी ना आपको. इंटीग्रिटी. व्हाट इंटीग्रिटी? भक्ति करके एहसान कर रहे हैं हम लोगों को, नए बच्चे. When we are grown up, we should not always remain in that same position. Comfortable, प्रभु जी सब दूसरे लोग करें, प्रभु जी मैं क्या करना, तो वैसे ही पति तो है कि नहीं. प्रभु जी आप थोड़ा भगवान को भोग लगा, मैं कहाँ से लगाऊं? भगवान को भोग ललिता विशाखा लगाती है, मैं तो वैसे ही पतित आत्मा हूं, मैं क्या करूं? So with time, we should become responsible in our behavior, in our character, in our responsibilities also. Not that we remain on that same platform every time. क्योंकि जिस जगह पर हैं, वहां पर रहने पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. When we grow, we need to become responsible. We need to do hard work. We need to struggle. To become a good preacher, you need to become a good devotee. You need to become a good devotee. You need to chant nicely, attentively. आप अगर मॉर्निंग प्रोग्राम में नशेड़ी की तरह घूमोगे, will juniors have inspiration? यही बोले क्या है, इनके हाथ में माला आई और बस इनका हैंगओवर चालू. Would you like to sit in a circle of devotees, everyone is sleeping? हमें भी ऐसा लगता है ना, इस समय जूते मार क्या चल रहा है कि नहीं. We should become more and more
for that we need to put hard work in our reading and hearing. All of us want preaching should increase, yes or no? Do we increase our reading hearing? Yes. We need to. 1 घंटे का lecture we should study for 3 hours, then we can hear. हम क्या उसी लेवल पर रहते हैं। सेकेंड ईयर में जैसे मैं कभी कभी किताबों को हाथ लगाता था जब प्रभु जी बोलते थे, अभी भी हमारा वैसा ही है और हम दुनिया बदलने चले। I shouldn't ask statistics of book reading from all of you. कि पता है वो निराशाजनक ही होंगे, right? For everything we need to put hard work. In our dealings, we should become more mature, more refined. If you are still dealing with everyone like you're in second year, अभी घर पे हम वैसे डीलिंग करेंगे जब हम 2-3 साल के थे, चलेगा क्या? 25 साल की उम्र में अभी हम सोफे पे बैठे हैं और सुसु कर दें। घर पे आप लोग गए और आप बिस्तर पे गए और आपने वहां पे सुसु कर दी, 20 साल के हो गए, घर वाले चप्पलों से नहीं मारेंगे? कह रहे मैं तो बच्चा ही हूँ, ये मेरे बड़े भैया लोग हैं, ये बड़े बने, मुझे तो बच्चा ही रहना है। कढ़ाई फेंक के नहीं आपकी मम्मी ने मारा। So we can't be childish every time. If we will not do things properly, how will our juniors learn? Simple things are very very important. That's why integrity is important. आप माला कर रहे हो, फोन चला रहे हो, और फिर आप सुबह क्लास दोगे, चैंटिंग शुड बी अटेंटिव। ऐसा कोई बोलता है ना, अगर कोई ऐसा बोलता है ना जो करता नहीं है, सामने वाले जो सुनते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि बस इसमें पत्थर फेंक के मारे हैं। यस और नो? सही बात बताओ। You are chanting, operating mobile, and then you will recite 10 offenses. It's also an offense to be inattentive while chanting. Every devotee who claims to be a Vaishnava, ऐसा लगता है कि माइंड से ही गला को तुमने इसका ही कैसे आ रहा है? Yes or no? Yes. We should become more mature and responsible, more serious for hearing classes, for everything. And it is a pity that devotees don't take spiritual life seriously than their profession, than their college studies. If someone is at home doing some work, ठीक है, if you will call him to temple, he will not come. प्रभु जी घर पे काम है। कॉलेज में एग्जाम होता तो घर पे मौत हो जाती तो भी आता कि नहीं आता? So what is more serious for us? College study is more serious than spiritual life. अगर कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, उसमें आपके घर से फोन आ जाए, उठाओगे? कितने लोग उठाएंगे? कितने लोग उठाएंगे? No one will dare to. एग्जाम कैंसिल है, फेल हो जाऊंगा। क्लास में उठाते कि नहीं उठाते? Yes or no? Does this show our seriousness? Preaching बढ़ानी है हमें। Many examples like that. भक्ति में सब कुछ करेंगे। If it will come on profession, if it will come on academic studies, उसमें कोई compromise नहीं होगी। जीवन रोटी पानी का सवाल कहाँ जाएगा? Spiritual life चलती रहेगी, आप क्या करिए? There is no seriousness, there is no transformation also. That discipline has to be maintained. That's why there is integrity. That's why our senior, our juniors don't respect us. हमें लगता है कि मैं बेस में जा रहा हूँ प्रीचर बन के, मैं सीनियर हूँ बेस में, बच्चे सुन ही नहीं रहे प्रभु जी। Then we go to प्रभु जी, बच्चे सुन ही नहीं रहे आज क्यों? Why are people not inspired प्रभु जी? Because you are garbage. That's the problem. ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया? Okay. उसी बात पे जोक सुना दे। सुनाया हुआ है पहले, जिन्होंने नहीं सुना उनके। एक बार एक ग्रस्त भक्त तपस्या कर रहा था, he was doing austerities। तो उसके सामने भगवान आए, भगवान स्वयं बांसुरी लेके कि बेटा क्या चाहिए? वो ग्रस्त भक्त बोलता है, भगवान
मुझे फिर से ब्रह्मचारी बना दो। भगवान उससे पूछा कि बेटा कुछ मन्नत मांगो, तो उस भक्त ने क्या बोला, मुझे फिर से ब्रह्मचारी बना दो, बहुत परेशान हूँ। तो भगवान बोलते बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। It was a brahmachari joke. Don't quote it outside. Not to be quoted outside this room. अब मेरा नाम तो लेना ही मत। This is a Quran joke. Okay. Any other question? Okay, Lara. Any other comment, reflection, correction? कोई? शिवम प्रभु, श्याम केशव प्रभु. मेरी बारी प्रभु कर सकती है, कोई नहीं प्रभु। Okay, let's stop here. Thank you very much, Hare Krishna. So we are very grateful to all of you to give your valuable time, and we actually extend our forgiveness. We couldn't serve you properly with good facilities. All of you did so much austerities. चाहे वो सुबह उठने के लिए हो, मंगल आरती के लिए हो, हर चीज़ के लिए हो, क्लासेस बहुत बार टाइम बहुत बार बढ़ गई।